let's discuss bearings. So first of all, basic definition of bearings, right? A bearing is an angle. Better please remember that. In other words, bearings is an angle, right? So angles हम calculate करते आ रहे हैं since I think grade 2, 3 onwards. We are, we know how to calculate angles और हमें understanding है angles की. Or in later classes, alternate angles or vertically opposite angles, and we know how to calculate different angles. So हमें angle beta find करना है. In other words, ठीक है? So why we have given this name bearings? So what is special in that? So इसको जरा हम देखते हैं, right? तो calculate हमने angle करना है, but what is special in that? इसको जरा देखते हैं. So a bearing is an angle measured clockwise. Number one, ठीक है? So clockwise we know that clockwise is this direction, ठीक है? Clockwise is this direction. So measured clockwise from north. So beta simple as that. Bearing अगर आपने किसी भी एंगल की कैलकुलेट करनी है, so what you have to do is आपने वहां पर नॉर्थ बनाना है उस पॉइंट के ऊपर. एंड वी नो नॉर्थ इज एग्जैक्टली अ वर्टिकल लाइन जो कि हम ड्रॉ करते हैं, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर देते हैं. सो ये आपने नॉर्थ बना दिया एट ए फॉर एग्जांपल. सो इफ वी से कि बेयरिंग ऑफ ए हमने फाइंड करना है, राइट? सो ये क्या हो जाएगा? दिस एंगल जो कि नॉर्थ के साथ बन रहा है, ये बेटा इसका बेयरिंग होगा, राइट? ये हमारे पास एंगल होगा 52 डिग्रीज. वो भी हम डिस्कस करते हैं. बट द एंगल विल बी मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्थ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट? सो अगेन अ बेयरिंग इज एन एंगल. तो हमें सिर्फ एंगल मेजर करना है क्लॉकवाइज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ. सो बेटा नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे until you reach that required line जिसको वो कनेक्ट कर रही है. वो हम डिस्कस करते इन द कमिंग पार्ट. ठीक. द सेकंड पॉइंट, बेटा प्लीज रिमेंबर दैट bearings को we always write that in 3 digits. It is always given in 3 digits. For example 52 degrees है, so अगर हम इसको bearings का आंसर लिखेंगे we'll always write 052. so हम 3 digits में bearings को लिखते हैं. 232 degrees तो 232 degrees is automatic, it's already in 3 digits. Let's say कोई आंसर आया जी 9 degrees. so अगर हम bearings का आंसर लिखेंगे तो 9 डिग्रीज को बेयरिंग्स में हम लिखेंगे 009 डिग्रीज. सो बेटा प्लीज रिमेंबर दैट. सो इट इज ऑलवेज रिटन इन 3 डिजिट्स, राइट? नंबर. अब लेट्स कम टू दिस एग्जांपल. द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए. बेटा द लैंग्वेज इज सिंपल बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक. अब इसमें 2 लेटर्स दिए हुए. नॉर्थ कहां ड्रॉ करने हैं? जस्ट रिमेंबर दैट इफ यू पिक दिस पॉइंट, beta bearings would be the easiest topic for you, right? So please listen to me carefully. वो कह रहे हैं the bearing of B from A. So beta remember that ये जो letter है after from, so from A means A is your pivot, right? So north किस पे बनाएंगे? जो from के बाद वाला letter होगा. So A पे हमने north draw कर दिया. So bearing of B from A. So ये आपका A पे नॉर्थ बना. सो पिवट से थोड़ा सा ऊपर से आप कैलकुलेट करेंगे इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो ये नॉर्थ से आप स्टार्ट करेंगे फ्रॉम नॉर्थ, राइट? आपने जो ए का आपने फ्रॉम ए फाइंड करना है, तो पिवट से थोड़ा सा ऊपर से इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन अंटिल यू रीच द लाइन बी. सो ये बेटा आपके पास बेयरिंग होगा, बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए. तो आपका जो नॉर्थ बनेगा वो ए पे बनेगा, राइट? ये आपका पिवट है. सिमिलरली द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी. सो अब फ्रॉम के बाद कौन सा लेटर है? बी. सो बी इज योर पिवट. सो बेटा बी पे आप नॉर्थ बनाएंगे. इसको बेशक थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो नीचे सो दैट इट वुड गिव यू मोर क्लैरिटी. सो ये आपने नॉर्थ बना दिया. तो बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, राइट? तो नॉर्थ बना के पिवट से थोड़ा सा ऊपर से, राइट, आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना है अंटिल यू रीच दैट लाइन बी. सो पिवट से थोड़ा सा ऊपर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन अंटिल यू रीच दैट लाइन बी. सो ये एंगल लेट्स से अगर 232 डिग्रीज है, सो दैट वुड बी द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, राइट बेटा?
So I hope the basic concept of bearing is clear कि first thing is first आपने pivot को identify करना है कि from which point आपने bearing लेना है. तो जहां भी bearing है हम वहां vertical line यानी knot हम draw कर देंगे, right? और pivot से थोड़ा सा ऊपर until you reach that required line AB, right? So that is the concept of bearing. और हमने angle बेटा clockwise direction में from the north until you reach that point, right? So let's look into few questions. जरा इसको apply करते हैं questions के ऊपर so that you get more understanding, more clarity. Let's have a look at this question. A ship sails 35 kilometers on a bearing of 42 degrees. A part, how far north has it traveled? And B part, how far east has it traveled? Right. So when directions तो already हमें idea है कि north, east, west and south की क्या directions हैं. Let's try to make a figure and let's see what happens. Right. A ship sails 35 kilometers. Right. So obviously let's say this is the harbor. यहाँ से ship sail करता है. Right. On a bearing of 42 degrees. So we have already discussed बेटा जो pivot है. So pivot के ऊपर हम knots draw करेंगे. A vertical line. This is your knot. Right. यहाँ से ship sail करना शुरू कर रहा है. Right. और I always tell my students कि जरा x axis भी draw कर दिया करो dotted so that एक realistic हम figure draw करें, right? So that the figure is more closer to reality. एक realistic figure होनी चाहिए. So you should know कि okay ये 90 degrees के हमारे पास quarters हैं, so हमने कहाँ angle draw करना है, right? So a ship sails 35 kilometers on a bearing of 42 degrees, right? So pivot से थोड़ा सा ऊपर से हम start करेंगे as we've discussed और angle कहाँ को mark करेंगे clockwise direction में, right? So 42 degrees less ये 90 degrees है, right? ये 90 degrees है, so less than that approximately कह लें. Let's say this is 45, this is 42 degrees, right? So a ship sails 35 kilometers on a bearing of 42 degrees. So north से let's say ये 42 degrees के bearing पे यहाँ तक for example it traveled 35 kilometers, for example, at this point, right? So how far north has it traveled, right? So let me just extend this north ताकि clarity आ जाए. Okay, so how far north has it traveled, right? हमने सिर्फ towards north बेटा इसकी direction देनी है. So let's draw a dotted line, horizontal line. Let me just ये horizontal line हमने draw कर दी, right? A dotted line, right? So ये basically in the first part how far north has it traveled. So ये distance हमने find करना है. That is what the examiner is trying to ask you. How far north has it traveled? So again बेटा application of right angle triangles already हमने multiple times ये concept discuss किया है. In a right angle triangle go for trigonometric ratios. Very simple. The first thing is first, let's label the right angle triangle. Angle के 90 degrees के सामने वाली side hypotenuse, angle के सामने वाली side opposite, और जो से side बच गई that is your base, right? So कौन सी दो sides connect हो रही हैं? Base and hypotenuse, right? So base and hypotenuse क्या use होगा? Cos, right? So हम क्या लिखेंगे? Cos of the angle is base over hypotenuse 35, right beta? So again cross multiply. ये आपके पास distance आ जाएगा कि how far north has it traveled. So again pick up your calculator. It's hardly a 5 seconds question. So 35 multiplied by cos 42 ब्रैकेट क्लोज, तो ये बेटा आंसर आ गया 26. So 26 kilometers is the distance that it is traveled due north, right? So ये बेटा A part का आंसर आ गया. Let's look into the B part. How far east has it traveled, right? So बेटा east इसने यानी ये इसका starting point है for example. So how far east has it traveled? In other words ये डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, ये डिस्टेंस, राइट?
सो इसको हम इरेज कर देते हैं. So how far east has it traveled? ये तो already हमने find कर लिया. So now this is the figure for part B. How far east has it traveled? So east की direction already we know it's towards the right. ठीक है? 90 degrees towards the right. चलो. So B part क्या करेंगे? Again first label the triangle. Everything remains the same. ये side बेटा hypotenuse. This side is opposite and this side is your base. Right? So हमें अब कौन सी दो लेंस के बने? ऑपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज. सो वील यूज साइन. तो अप्लाई करो. साइन ऑफ द एंगल इज ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज 35. सो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. सो 35 इंटू साइन 42. दिस इज वाई. सो वाई आपके पास ये डिस्टेंस कितना आ गया? लेट्स पिक अप द कैलकुलेटर. सो दिस इज 35 multiply the sine of 42 bracket close. ये बेटा आपका आ गया 23.4 kilometers, right? So I hope this is very simple. You found it to be a very simple question. So bearings बेटा सिर्फ यही मतलब है कि आपने whatever the pivot is, जहां से एंगल वो मेजर कर रहा है, so वहां पर आपने नॉट्स ड्रॉ करने हैं और जस्ट पिवट से थोड़ा सा ऊपर से आपने मार्क करना है, एंगल मेजर करना है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन until you reach that line, right? So ये इसका bearing था. I hope this is absolutely clear. Let's look into another question. Right, let's look into the second question. A ship sails 200 kilometers on a bearing of 243.7 degrees, right? How far south has it traveled? And how far west has it traveled, right? So better once again, let's try to make a figure. Let's see what happens. So let's say this is the harbor from where the ship is going to sail. So better this is your pivot, right? यहाँ से आपने bearing measure करना है. So it sails at a bearing of 243.7 degrees, right? So pivot के ऊपर बेटा हम नॉट्स ड्रॉ करते हैं. थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया करो. इट वुड मेक यू नो इट द फिगर इजियर फॉर यू. और एक्स एक्सिस डॉटेड जरूर ड्रॉ किया करो सो दैट एक रियलिस्टिक फिगर ड्रॉ. राइट. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बेटा बेरिंग हम एंगल कहां से मेजर करना है बेरिंग्स में? पिवट से थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करेंगे. बट इन विच डायरेक्शन? इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो वी नो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है. सो पिवट से थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करेंगे और इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यहां तक 90 हो गया, राइट? नॉर्थ ईस्ट में 90, ईस्ट और साउथ में 90, राइट? सो 90 प्लस 90 180 और another 90 would give us 270. So it would be between 180 and 270. So let's say ये आपके पास शिप सेल करके यहां आ गया. So this complete angle is 243.7 degrees, right? So that is the total bearing of this ship जिसमें वो सेल करना स्टार्ट कर रहे हैं. So it traveled, let's say 200 kilometers. So let's say it reached at this point, right बेटा? तो अब वो क्या कह रहे हैं हमसे कि how far south has it traveled? ये इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, right? So how far south has it traveled? So vertically downwards. इसको हम जरा let's say हम right angle triangle complete कर लेते हैं. So this would give you again a right angle triangle. So south means आपने अब ये वाला distance calculate करना है, ये वाला this distance. ये angle मैं इधर लिख देता हूं 243.7 degrees. So this distance is required. How far south has it traveled? I hope the figure is easy and it's very clear, right beta? अब देखो, we need now a bit of common sense as well. We need this angle inside the right angle triangle बेटा. अब मुझे एक चीज बताओ सारे, हम सब ने बेसिक एंगल्स लर्न किए हुए कि 90 डिग्रीज एंगल क्या होता है, 180 डिग्रीज क्या होता है एंगल. सो एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज व्हाट? दैट इज 180 डिग्रीज, राइट? एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्रीज, वी नो दैट. सो अब जरा मुझे बताओ, ये नॉर्थ की स्ट्रेट लाइन है, सो एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्रीज. सो यहां से यहां तक तो हो गया 180 डिग्रीज. सो व्हाट इज लेफ्ट? सो 243.7 में से
let's deduct 180 degrees. So 243.7 minus 180 degrees. So ये बेटा आपके पास आ गया 63.7 degrees. I hope this is absolutely clear, right? So ये आ गया 63.7 degrees. क्योंकि ये north से north angle of straight line 180 और the remaining angle would be 63.7 degrees. So अब बेटा आपके पास right angle complete हो गई है. X हमने find करना है. ये आपके पास I'll rewrite this. This is 200 kilometers, right? इसको हम इधर erase कर देते हैं so that the figure is more clear. अब first thing is first. हम इसको label करते हैं. 90 के सामने वाली side hypotenuse, angle के सामने वाली side opposite, and this side is your base, right बेटा? So कौन सा trigonometric ratio लगेगा? जरा देखते हैं. Base और hypotenuse connect हो गए. So once again cos x. So cos of the angle is base over hypotenuse, which is 200. I hope this is very clear, right? So हमने क्यों cos x बेटा अप्लाई किया? क्योंकि base हमने फाइंड करनी है और जो गिवन लेंथ है दैट इज हाइपोटेन्यूज. सो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज cos, राइट? सो अगर कोई प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बेटा कि हमने क्यों इसको why not we have taken sin x या हमने why not we have taken tan, so go to my previous video of trigonometric ratios, basic triangle की जो वीडियो है. So just have a look at that and then you can come to this video, right? So just simply cross multiply 200 into cos 63.7. So ये बेटा आपके पास वैल्यू आ गई. You just have to pick your calculator and you'll write 200 multiplied by cos of 63.7 bracket close, and this is 88.6 kilometers. Three significant figures, right? Distance का आंसर 3 significant figures, right? Okay, so ये आपका था first part. This was your first part. Let's have a look to your second part, B part, right? So अब वो क्या कह रहा है B part में? How far west has it traveled? So basically अब आपने ये distance calculate करना है. यहां से west, तो this distance and this distance is exactly the same. एक ही बात है. So how far west has it traveled? So basically अब हमने बेटा ये distance, let's say हम इसको y कह लें. So basically now we have to find y, right? So the triangle is same, everything would remain the same. 90 के सामने वाली side hypotenuse, this is your base, and this side जो angle के सामने वाली side है, this is always the opposite side, right? So let's see कौन कौन सी lengths connect हो रही हैं. So we have again opposite और hypotenuse. So opposite and hypotenuse कौन सा ratio connect कर रहे हैं? sin x. So sin x is opposite over 200, right बेटा? Cross multiply कर दो. So this is 200 into sine of the angle which is given. So I should have written sine 63.7, right? So let's write sine 63.7 is equal to 1. 200 हमने cross multiply कर दिया, right? Simple cross multiply होगा. So we have to find this value of y. Pick up your calculator और 200 multiplied by sine 63.7 और ये बेटा वैल्यू आ गई 179 किलोमीटर, राइट? सो ये डिस्टेंस इसने कैलकुलेट किया है टुवर्ड्स वेस्ट, राइट? ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया. सो आई होप दिस एग्जांपल वाज आल्सो वेरी इजी फॉर यू. सिंपल है बेटा. ऑब्वियसली bearings का concept, it should be simple now, and you draw the correct figure, and then obviously it's 1 plus 1. So maths is a very easy subject provided the concepts are clear. And believe me, maths के concepts, they are so simple that if you get a good explanation, and obviously if you listen to it properly, थोड़ी सी practice कर लो, तो बेटा it's 1 plus 1. Everyone can get 100% marks, right? Let's look into another question. Let's look into the third example. An aircraft flies 400 kilometers
from a point O on a bearing of 25 degrees, right? And then 700 kilometers on a bearing of 80 degrees. So that means at this point, it has changed its course, it has changed its direction, and it has further, flown 700 kilometers on a bearing of 80 degrees to arrive at B, right? So what are the questions now? How far north of O is B, the final destination? And how far east of O is B, right? So let's try to make a figure and let's see what happens, right? Right, so let's see, let's say this is the point where the aircraft took off. So हम यहाँ पे बेटा north बनाते हैं. Let's say ये आपने north draw कर दिया, right? It flies 400 kilometers from point O on a bearing of 25 degrees. So as I always recommend, x-axis भी draw कर लिया करो, so that pivot के ऊपर, so that बेटा you get a realistic figure, you make a realistic figure, right? So this is your x-axis, ये north, right? East-west भी आ गया आपके पास. So 25 degrees realistic, again pivot से थोड़ा सा ऊपर, and you have to measure किधर करना है, clockwise direction, right? So let's say ये 25 degrees है, right? And it has traveled a distance of 400 kilometers, right? 400 kilometers. Let's say it reached this point, right? After traveling 400 kilometers. And then 700 kilometers on a bearing of 80 degrees. So again, you've got another pivot. So don't get confused. First part beta yahan tak, first part humne draw kar liya. So analysis, understanding of the question is really important, right? So that is 90% of the answer. I always tell my students, if you get what the examiner is exactly trying to tell you, so you've solved 90% of the question, right? So, and then 700 kilometers on a bearing of 80 degrees. So that means this is your new pivot because yahan se wo direction change kar raha hai. So we'll draw a north here as well. और ये छोटा सा x axis draw कर लेते हैं. So that again you make a realistic figure. Okay. So this north and this north, they are parallel lines, right? So at a bearing of 80 degrees. So again less than 90. So let's say यहाँ पर पहुंच गया and it has flown another 700 kilometers at point B. So let's say this is your point B, right? So mark करते हैं, pivot से थोड़ा सा ऊपर से बेटा start करेंगे. कहां पर बेरिंग मार्क करते हैं? इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो ये आपके पास एंगल है जी, दिस इज 80 डिग्रीज, राइट बेटा? नॉर्थ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं. लेट्स एक्सटेंड दिस नॉर्थ अ बिट और दिस इज फाइन, राइट? सो ये बेटा नाउ दिस इज द एक्चुअल सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग इन द क्वेश्चन. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. अब हम जरा क्वेश्चंस पे देखते हैं. There would be hardly, one line, two line answers. अब तो हमने सिर्फ इंटरप्रेट करना है. How far north of O is B, right? So how far north of O is B? So this is your O. That was your starting point. Flies through point O. So that is your starting point, and this is your B, right? So how far north? We know this is north of O is B. So basically. What I do is मैं 700 को जरा नीचे लिखता हूं so that and इसको हम erase करते हैं so that the figure is clear. So basically ये मेरा आपने इसको हम x axis को जरा extend कर देते हैं. Let's also extend this a bit. Okay. अब it's clear now. So how far north of O is B, right? So हमने distance calculate करना है only towards north, only the vertical distance of O and B, right बेटा? सिर्फ हमें ये distance चाहिए. So let's say इसको x mark कर देते हैं, right? So now the problem is कि ये तो कोई right angle triangle नहीं बन रही. What is this figure? If you look at the complete figure, so ये तो कोई triangle right angle triangle नहीं बन रही. But we can see as we previously done questions where there are two right angle triangles combined, right? So we can, अगर हम इसको break करते हैं into two right angle triangles, so इस point को भी जरा जहां से उसने direction change की थी, let's
make an x-axis as well. So ye beta, now this makes sense. Now this makes sense. So what does this mean is, let's find this distance and let's find this distance y, right? Isko hum y keh dete hain. So x plus y would be the total distance from O to B. Simple as that. X plus y would be the total distance from O to B from in the north direction. So what we'll do is we'll simply calculate x and we'll calculate y and we'll just add them, right? So let's try to find this. So this is a right angle triangle and this is a right angle triangle. So first thing is first, जरा हम label करते हैं. This is your hypotenuse. Angle के सामने वाली side is your opposite. और बेटा जो side बच गई that is your base. इस ट्रायंगल पे भी मार्क करते हैं 90 डिग्रीज के सामने भी साइड इज योर हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने भी साइड इज योर ऑपोजिट, और जो साइड बच गई दैट इज योर बेस. सो दिस इज योर बेस, राइट? सो लेट्स लुक इनटू द फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल. कौन कौन सी दो साइड्स कनेक्ट हो रही बेटा? बेस एंड हाइपोटेन्यूज. तो वंस अगेन कॉस, हम जरा कॉस अप्लाई करते हैं. सो कॉस ऑफ द एंगल इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. सिंपल. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. सो 400 इंटू कॉस ऑफ 25 इज इक्वल टू एक्स. सो अगेन टू लाइन्स आंसर. जस्ट पिक अप योर कैलकुलेटर. 400 मल्टीप्लाई बाय कॉस 25 और ये बेटा आंसर आ गया 362.523. 362.523. Once again, the same rule which I always discuss, if a value you have to use in the later parts, please don't round it off, because अगर आप round off करते हो तो accuracy से deviate कर जाते हो, right? So to maintain that accuracy, तो minimum 3 decimal places तक value लिया करो. If a value if you can see कि अगर वो अगले parts में use होगी, right? So ये आपके पास बेटा distance आ गया x kilometers, right? Let's find the distance y. So again, already हमने label किया है base and hypotenuse. So base and hypotenuse, once again, जैसे इस केस में था, cos लगेगा. Apply cos of the angle which is 80 degrees, and this is base over hypotenuse, right बेटा? Cross multiply करो. 700 into cos 80. So this is y. So y आपके पास आ गया. Just pick up your calculator beta and write 700 into cos of 80 degrees, and this is 121.554, right? 121.554. So how far north of O is B? The complete length will be the total distance is x plus y. I think this is very clear. So what is x? 362.523 plus what is y? This is 121.554, and this would give you, just beta add this again, you need calculator. 362.523 plus plus this 121.554, right? You have to add these two distances, right? This and this. So ये बेटा आपके पास आ गया 484 kilometers. 484 kilometers. So that is how you will find how far north of O is B. So the only thing was बेटा कि ये दो right angle triangles बन रहे हैं. Again, the language was important. How you translate it, again, it comes with practice. So this was a good question, and again, it divided the whole figure into 2 right angle triangles. So again, go for trigonometric ratios, label करो triangle को, and it's simple. Just simply sin x लग रहा है, cos x लग रहा है, या tan x लग रहा है, whatever is the appropriate trigonometric ratio, बेटा आपने वो apply करना है, and you'll get the answer, right? I hope this is simple. Let's go on the next part. जरा हम next part देखते हैं. How far east of O is B, right? So you have to find this complete distance. So once again,
The triangles remain the same. मैं सिर्फ इसको erase कर देता हूं so that we get space to solve this. Okay. The triangles remain the same and we're solving the B part. Right. So अब हम जरा this is, we don't need this and we don't need this. Right. Instead हम इसको x रख लेते हैं. Right. So because अब हमने how far east of goals. So we know this is north and this is east. East is towards the right. So this is x and this distance is your y. So x plus y would give you the total distance towards east, right, of O and B, right? ये आपका total distance आ जाएगा. So again, let's solve this. So opposite and hypotenuse. Opposite and hypotenuse. So you just have to apply sine twice, right? So पहले हम इस पे देख लेते हैं how we find x. So sine of the angle is opposite, which is x, over hypotenuse, which is 400. So just simply cross multiply this to sine 25. So beta x आ गया. Pick up your calculator. 400 multiplied by sine 25, and this is 2.95, right? This is 2.95. I think there is something wrong because this cannot be such a small figure. So that would give you an indication. Obviously distance is kilometers में, so this won't be the right answer. Let's recheck this. So बेटा इस तरह के errors हो जाते हैं, so you should be vigilant, you should be careful. Let's try this again. So 400 into sine 25 bracket close. Yes, 169.047. 169.047. Much more realistic value, right? अब जल्दी से हम इसकी भी बेटा लेंथ फाइंड कर लेते हैं. So let's find out this y. Again, सारी sides label हुई हुई हैं. Opposite, again you will apply sine. So sine of the angle is opposite over hypotenuse 700. Just simply cross multiply. So beta y की value क्या आ गई? This is 700 into sine 80 bracket close, and you get 689.365. 689.365. So the total distance east of O and B is x plus y. So the total distance east is x plus y, right beta? So what is x and what is y? 169.047 plus 689.365, and you will get, let's just add this, 169.047 plus 689.365, right? And this would give you 858 kilometers. So 858 kilometers. So that is beta how you solve a bearing problem. कोई भी question आ जाए, just see कि what is the pivot, simple as that. उस पे knots draw करो. Don't forget to draw a small x-axis, right? So that you make a realistic figure. And just simply label the right angle correctly, because ये application है बेटा. Normally आपके पास right angle triangles बनती हैं. And just simply appropriate trigonometric ratio apply karo and you'll get the answers. So I hope you've learned bearings now. इसको बेटा apply करो और मुझे comments में बताओ concepts आपको कितने clear हुए हैं, और further कोई ambiguity है तो बेटा वो भी मुझे बताओ.